Good morning, students. How are you? Welcome. You're most welcome. Today we will start new chapter, your second chapter of your book, Admission of a New Partner. Admission of a new partner. Before this, we will understand that reconstitution of partnership. Reconstitution of partnership firm. What is the reconstitution of partnership firm? It means पार्टनरशिप का कॉन्स्टिट्यूशन दोबारा बनाना, यानी कि पार्टनरशिप में कुछ चेंजेस करके उसको रीफॉर्म करना. ठीक है, दैट इज़ द मीनिंग ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म. इट मीन्स any changes in the existing partnership arrangement among the partners. It means जैसे पार्टनरशिप डीड है, उसमें आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, कैपिटल्स हैं, दैट राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ पार्टनर्स है एंड अदर थिंग्स, दैट एनी चेंजेस इन द पॉइंट ऑफ द पार्टनरशिप डीड दैट द called reconstitution of the partnership. Okay, any changes in the existing partnership arrangement, जो हमारी अभी पार्टनरशिप अरेंजमेंट हैं उनको हम चेंज कर रहे हैं, पार्टनर्स के बीच में कुछ रिलेशन चेंज हो रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड द रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म. मेनली 5 things, that 5 arrangements that changes the form of the partnership firm. First, admission of a new partner. When a new partner is come into the existing partnership firm. For example, A and B, 2 partners. For example, A and B, 2 partners. Okay. Then C come into the partnership firm. Then that is the new admission of partners. Okay. Then second है changes in the profit sharing ratio among the existing partners. Sometimes that existing partners, it means old partners, it means, for suppose A and B and C, 3 partners हैं already. Profit sharing ratio 1/3, 1/3 and 1/3. तीनों पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल, 1/3, 1/3, 1/3. नेक्स्ट 3 पार्टनर्स टुगेदर दैट डिसाइडेड द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी चेंज्ड, कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हम चेंज कर लेते हैं, कुछ भी कर लिया, 2 ईच, 3 ईच, 4, ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कर लिया. दैट चेंजेस इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो will also cause of reconstitution of the partnership firm. Then third cause, retirement of an existing partner. If there are 3 partners in the partnership firm, A, B and C, any partner, for example C want to go and partnership, C don't want to do partnership firm further, वो जाना चाहता है पार्टनरशिप फर्म को छोड़कर. देन रिमेनिंग पार्टनर कौन रह जाएंगे? ए एंड बी. सी रिटायर हो जाएगा, पार्टनर से छोड़ के चला जाएगा. देन दिस इज़ द रिटायरमेंट ऑफ पार्टनरशिप फर्म. एंड फोर्थ कॉज है डेथ ऑफ अ पार्टनर. व्हेन अ पार्टनर बिकम डेड, पार्टनर की डेथ हो जाती है, तब भी आपकी क्या होगी? पार्टनरशिप दोबारा बनेगी. देन लास्ट पॉइंट, अमलगमेशन ऑफ 2 पार्टनरशिप firm. When amalgamation, it means 2 partnership firm with together and form only one firm together. Then 2 पार्टनरशिप फर्म मिल जाती है, 2 फर्म आपस में मिलके एक नई फर्म बनाते हैं, उसको हम बोलते हैं अमलगमेशन. Then 2 पार्टनरशिप फर्म come together and amalgamate each other, एक दूसरे में मिल जाना, amalgamate each other and one new firm form.
That is the main situations of the reconstitution of the partnership firm. So we will read in this chapter admission of a new partner. First जो हमारी situation है admission of a new partner, we will read. Admission of a new partner, I had told earlier that new member come into the partnership firm as a owner. New person come into the partnership firm as a owner, and it increases the number of partners. Obviously, it increases the number of partners. For example, A and B, two partners. When C want to come and join the partnership firm, that the number of partners will be the A, B and C, that 3 partners, from 2 to 3 partners. So, for if admission of a new partner, that he has rights, 2 rights. What the 2 rights? Right to share in the assets of the firm and right to share in the future profits of the firm. उसको राइट रहेगा कि जो फर्म की असेट्स है उसमें उसका शेयर है, उसका हिस्सा है, उसका पार्ट है, एंड राइट टू शेयर इन द फ्यूचर प्रॉफिट. फ्यूचर प्रॉफिट इट मीन्स after the joining of the new partner, after the admission of the new partner, the profit, यानी कि it means the profit earned by the firm, after the admission of the new partner, that is called the future profit. It means before that the new partner is admitted in the firm, that firm would earn profit, loss, with whatever things, that new partner will not be right. New partner has no right to achieve that before the admission of the new partner. Okay, that new partners brings capital. Yes, उसको कुछ ना कुछ कैपिटल तो लगानी ही पड़ेगी, आएगा तो फर्म में, तभी उसको असेट्स पर राइट मिलेगा. ओके, एंड कुछ अमाउंट्स उसको पे करना पड़ता है अपने फ्यूचर प्रॉफिट के लिए, जिसको कि हम बोलते हैं गुडविल. वी विल रीड अबाउट दैट गुडविल इन दिस चैप्टर, बट अभी नहीं, थोड़े टाइम बाद. दैट मेन एडजस्टमेंट एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, व्हेन द न्यू पार्टनर कम in the partnership and join the existing partners, then some adjustments are needed. What is adjustments? Calculation of new profit sharing ratio, calculation of sacrifice ratio, valuation and accounting for goodwill, revaluation of assets and reassessment of liabilities, adjustment of accumulated profits, reserves, losses, adjustment of capital. What is these things? These things are not needed to note in your copy, in your notebook. ठीक है, these things are done in your book, that is sufficient, but you will understand this. Calculation of new profit sharing ratio. For example, 2 partners A and B, then their profit sharing ratio is equals to suppose for example half. ठीक है, then new partner C, third partner C, if come into the partnership, then he will get also profit. Yes, then he will get profit from where? From the old partners, that the new profit sharing ratio is changed of the 3 partners. Calculation of sacrifice ratio, it means abhi for example A or B partners, then प्रॉफिट रेशियो है 1:1 इक्वल. देन इफ सी कम, देन फ्रॉम वेयर ही विल गेट प्रॉफिट? फ्रॉम ए एंड बी. किससे लेगा वो? ए एंड बी से ही लेगा. क्यों? क्योंकि अभी तो सारा टोटल प्रॉफिट कौन डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं आपस में? ए एंड बी.
देन अब सी भी उनका हिस्सा हो गया, सी भी उनसे लेगा, तो प्रॉफिट आएगा कहाँ से? जो ए और बी का जो रेशियो उसी में से आएगा। तो ए और बी अपना कुछ कुछ पार्ट सी को देंगे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का कुछ कुछ पार्ट सी को देंगे, दैट इज़ कॉल्ड द सेक्रीफाइस। इससे क्या होगा? ए और बी का रेशियो जो होगा वो डेफिनेटली कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि नया पार्टनर और लेने आ रहा है, इससे ए और बी का रेशियो कम हो जाएगा। तो जितना रेशियो उनका शेयरिंग रेशियो कम होगा वो डेफिनेटली दैट विल बी सेक्रीफाइसिंग रेशियो। क्लियर है? वैल्यूएशन ऑफ अकाउंटिंग फॉर गुडविल। समटाइम्स the partners thinking that new partner will come in the partnership. Okay, then goodwill. What is the goodwill? Goodwill of the partnership firm when for many years then partnership and partners do the work for their firm, they will make reputation for the firm, then their goodwill of many years, then goodwill's value will be distributed, will be get to the old partners, because the efforts of the old partners, then goodwill are reputed and get by the firm. So the new partner has no right to take part in the goodwill, because the goodwill of the efforts of the old partners. So old partners right to receive the goodwill amount. So valuation of the goodwill will be necessary. Valuation of assets and reassessment of liabilities. Sometimes the partners revalued the assets and revalued the liabilities before joining the new partner, because they wanted to, if the profit on assets and reassessment of liabilities and assets, if the loss on assets and reassessment of liabilities, they want to share, only they want to share, not new partner. Adjustment of accumulated profits, reserves and losses. Sometimes in the balance sheet of old partners, accumulated profits are there, reserves are there and losses are there, then only the right of the old partners to distribute them, not the incoming partner. And adjustment of capital. Adjustment of capital we will read after that, then you will understand. That is the new admission of partner. Then न्यू एडमिशन ऑफ पार्टनर में फर्स्ट जो क्वेश्चन हैं, फर्स्ट जो थिंग है, दैट इज़ द कैलकुलेशन ऑफ द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड द सेक्रीफाइस रेशियो. व्हाट इज़ द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो? New profit sharing ratio, which ratio that the all partners including the new partner share the profits and losses of the firm. Okay, that is the calling the new profit sharing ratio. And sacrificing ratio. What is the sacrificing ratio? Sacrificing ratio, it means old partners sacrifices their profit sharing ratio in favor of the new partner, that is called the sacrificing ratio. Goodwill is paid to the sacrificing partner in their sacrificing ratio at the time of admission of a new partner. देखो, ओल्ड पार्टनर्स ने अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो किसको दिया? न्यू पार्टनर्स को दिया. तो then in this condition new partners take some amount of goodwill and will give to the old partners, that is called the premium for goodwill. Then we will do the questions of ratios. We will do the questions of ratios in my next video. Okay, thank you.